Assalamu alaikum. I'm going to discuss the gas exchange in the reptiles. Reptiles exchange respiratory gases across the internal respiratory surfaces to avoid losing large quantities of the water. As all of you people know that reptiles have a very hard skin covered with the scales. There is no respiratory exchange occur between the reptilian skin and the environment. This is an adaptation to conserve large quantity of the water because most reptiles are the terrestrial animals, and in the harsh environment in the harsh terrestrial environment, and there is a very much chance to lose water from the skin, so they have an adaptation. They never respire through their skin, and instead they use internal surfaces to respire, and the internal surfaces of the body are the lungs for the purpose of the respiration. A larynx is present, however vocal cords are usually absent. The larynx is the organ which is responsible for the production of the voice. However, vocal cords which are present in the human, they are absent in the reptile. Cartilage support the respiratory passage of the reptiles, and the lungs are partitioned into the spoon-like interconnected chambers. Lung chamber provide a surface area for the gaseous exchange. Now, the respiratory passageway of the reptile is supported by the cartilage, and the lungs are the spoon-like structures which are interconnected to each other. And internally, this spoon-like structure increases the surface area for gaseous exchange. The more the surface area, the more the gaseous exchange. The more the gaseous exchange, more oxygen is available to the cells. In most reptiles, a negative pressure mechanism is responsible for the lung ventilation. In negative pressure mechanism, there is no use of energy by the animal. How negative pressure mechanism is responsible for lung ventilation in the reptiles? I'm going to discuss this mechanism now. A posterior movement of the ribs and the body wall expand the body cavity. रिब्स मूव्स पोस्टीरियरली. अब रिब्स पीछे को मूव करेंगी और बॉडी वॉल एक्सपेंड होगी, जो बॉडी कैविटी को एक्सपेंड कर, बॉडी वॉल की भी बैकवर्ड मूवमेंट होगी और रिब्स की भी, जो बॉडी कैविटी को एक्सपेंड करेगी. अब जैसे ही बॉडी कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो कम होगा. लंग्स के ऊपर जैसे ही प्रेशर कम होगा, बाहर इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो ये यहाँ पे सिंपल जो है ना डिफ्यूजन का जो है प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. अब बाहर जो ज़्यादा प्रेशर है एयर का, तो डेफिनेटली बाहर से एयर अंदर को एंटर होगी. अंदर लंग्स के ऊपर प्रेशर कैसे कम किया गया? पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द बॉडी वॉल एंड द रिब्स. Air is expelled by the elastic recoil of the lungs and forward movement of the ribs and the body wall which compress the lungs. अब देखिए, इनहेलेशन तो हो गई, एयर को अंदर ले लिया, अब एक्सहेलेशन भी तो करनी है ना. एक्सहेलेशन के अंदर इलास्टिक रिकॉयल ऑफ लंग्स से एयर को बाहर निकाला जाता है बॉडी से. अब पहले जो पोस्टीरियरली मूव कर रहे थे एयर रिब्स और बॉडी वाल, अब वो एंटीरियर मूवमेंट करेंगे या फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे. उसकी वजह से लंग्स के ऊपर लंग्स कंप्रेस होंगे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा. जैसे ही उन पर प्रेशर पड़ेगा तो उनके अंदर से एयर बाहर को निकल जाएगी. द रिब्स ऑफ द टर्टल आर अ पार्ट ऑफ देयर शेल. टर्टल्स की जो रिब्स हैं वो उनके शेल का पार्ट है. दस मूवमेंट ऑफ द बॉडी वॉल टू विच द रिब्स अटैच आर इम्पॉसिबल. अब इस वजह से रिब्स वाली सूरत हाल तो वो तो कंडीशन ही ख़त्म हो गई ना ये टर्टल में, कि रिब्स की मूवमेंट की वजह से प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा. टर्टल्स एक्सहेल किस तरह से करती हैं? इनके मसल्स अटैच होते हैं विजरा के साथ. अब विजरा किसे कहते हैं? विजरा इंटरनल इम्पॉर्टेंट आर्गन्स को कहते हैं. इसमें हार्ट हो गया, जीआईटी ट्रैक हो गया, लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, ये इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है बॉडी के, इन्हें विजरा कहा जाता है. अब इनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं, ये विजरा को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. अब जैसे ये सारा विजरा अपवर्ड मूव करेगा एब्डोमेन में जो है,
तो ये लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब लंग्स के ऊपर जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होगा तो लंग्स compressing the lungs, they inhale by contracting the muscle that increase the volume of the visceral cavity, creating negative pressure to draw air into the lungs. ये इनहेल कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके मसल्स जो विजरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एयर रश इनवर्ड। थैंक यू, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक।